ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿਵ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੂ ਫਲਰਿਸ਼। That can be provided in terms of infrastructure, in terms of proximity or quicker access to ports. We are a landlocked state. Quicker access to ports, technological upgradation in various different manufacturing processes. There are a number of techniques that are put in place by the developed country world, even by China, which still have to percolate down towards our industry. Clusters or development centers should be set up to, can be set up to review those techniques, review the technologies available. Study. So please introduce yourself and share your insights. Thank you. Yeah. Thank you, Sandeep ji. So I am representing Foundation for Economic Development, and the purpose of our foundation is to help India's economic growth journey. And our belief is कि India का जो growth है या any country can only grow fast on the basis of exports. और हमें ये लगता है कि hand tool एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत हाई है. There are some other sectors like garments etc. which we will be talking about today, but hand tool is one of the highest potential export sector. तो हमें संजीत जी ने हमें बोला कि आप इसमें भी स्टडी करिए, तो हमने लास्ट 3-4 महीने में इसमें स्टडी किया है एंड वी हैव स्पोकन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स हियर इन जलंधर. तो इस स्टडी के 3 मेन पार्ट हैं. पहला तो हमने ये समझा कि जो पूरा दुनिया में हैंड टूल का सेक्टर है उसकी डिमांड कितनी है, कहाँ ग्रोथ हो रही है. दूसरा फिर हमने उसका इकोनॉमिक्स समझा कि आज जो हैंड टूल का मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे चाइना के पास उसका 40% शेयर है, इंडिया लेस देन 2% शेयर है. तो जो इकोनॉमिक्स है चाइना के कंपैरिजन में इंडिया की कॉस्ट में डिफरेंस क्यों है और कितना है. तो दैट सेकंड थिंग वी हैव स्टडीड, एंड देन बेस्ड ऑन दैट थर्ड थिंग वी हैव आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक पॉलिसी मेजर्स व्हिच आर नीडेड टू ब्रिज द कॉस्ट. तो some of that is policy measures and some of that might be then as incentive support package to ultimately इसके हम इसमें किस तरह से compete कर सकते हैं. तो let me just give a few highlights and then in further discussion we can flesh them out further. तो basically स्टडी से हमें ये निकल के आया है कि आज की तारीख में जो वर्ल्ड का हैंड टूल ट्रेड है, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंड टूल करीब $25 बिलियन, which is very substantial. इंडिया का एक्सपोर्ट उसमें लेस देन 1 बिलियन है. चाइना का 40% शेयर है, तो बेसिकली 25 बिलियन में से करीब 10 बिलियन चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है. अगले 10 साल में ये 25 बिलियन करीब 45 बिलियन हो जाएगा. सो इट्स अ वेरी लार्ज अपॉर्चुनिटी. हैंड टूल में आफ्टर डिस्कशन विद इंडस्ट्री वी हैव कंक्लूडेड कि 1 बिलियन का एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं, 1 बिलियन का ट्रेड, तो उसमें 60,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होते हैं. तो इट्स वेरी लेबर इंटेंसिव. जस्ट फॉर कंपैरिजन 1 बिलियन इन गारमेंट विच इज द हाईएस्ट लेबर इंटेंसिव करीब 1 लाख जॉब क्रिएट करता है. तो हैंड टूल इज ऑलमोस्ट एज लेबर इंटेंसिव एज गारमेंट्स. 1 बिलियन में 60,000 जॉब डायरेक्ट क्रिएट होते हैं. और तो हम इसमें क्योंकि चाइना की लेबर कॉस्ट शायद सबसे 3 गुना है, तो हमें लगता है कि 3 कि हम इसमें अगर हम काफी सारा मार्केट लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं. These companies are very good. उन्हें सब मालूम है कि मार्केट में क्या हो रहा है, वेरी गुड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. तो अब हमें 3-4 चीजें जो हमारा कंपेटिटिव डिसएडवांटेज है उसकी बात शॉर्ट में करता हूँ और डिटेल में फिर हमें जाना हो जाए तो हम जा सकते हैं. तो पहली चीज आती है कि हमारा रॉ मटेरियल में डिसएडवांटेज होता है. जो हमारा रॉ मटेरियल, जो स्टील में रॉ मटेरियल है इसमें, वो हमने स्पेसिफिक डेटा इवैल्यूएट किया. 10% हमारा स्टील चाइना के कंपैरिजन में महंगा होता है. तो हमें ये देखना कि हम जो इनपुट है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह के किस तरह से अपनी स्टील कॉस्ट कम कर सकते हैं. अगर नहीं है तो एक स्टील ड्यूटी इक्वलाइजेशन सपोर्ट मिल सकता है. दूसरी जो लेबर की बात आती है, लेबर हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है, लेकिन जो हमारे कुछ लेबर लॉस के एलिमेंट्स हैं जैसे कि हमारा ओवर टाइम
में 2x देना पड़ता है। कोई भी एक कंट्री में 1.5x से ज़्यादा नहीं है। आयोग की रिकमेंडेशन भी 1.5x है, हमारा 2x ओवर टाइम है। हमारे ओवर टाइम आवर्स में रिस्ट्रिक्शन है कि कितने घंटे एक क्वार्टर में ओवर टाइम हो सकता है। शिफ्ट में रिस्ट्रिक्शन है, दिन में 12 घंटे का नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे हो सकते हैं। तो जो हमारा लेबर का एडवांटेज है वो काफ़ी कुछ इससे हमारा कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारे लेबर लॉज में रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इस एडवांटेज को खत्म कर देते हैं। तो हमें सोचना होगा कि हम कुछ ऐसा अब न्यू लेबर कोड में स्टेट गवर्नमेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फॉर सर्टेन सेक्टर्स फॉर सर्टेन सेक्टर्स कैन वी ब्रिंग सम फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज। हमने लेबर से खुद बात की। लेबर खुद जब माइग्रेट करके आती है वो चाहती है कि वो ओवर टाइम करे, 12 घंटे काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। तो we need to be mindful of it कि what is the labor asking, what is the industry asking, so that we can create more jobs। तो लेबर लॉ में हमें थोड़ी जरूरत है। फिर हमारा इशू आता है पावर में, क्योंकि पावर की जो कॉस्ट है इंडस्ट्री को फुली सोलर कैप्टिव भी अलाउड नहीं होता है, प्लस वी हैव टू सब्सिडाइज फार्म, तो कॉस्ट पावर की ज़्यादा हो जाती है। नाउ दिस इज अ सेक्टर व्हिच कंज्यूम्स लॉट ऑफ पावर। देखना पड़ेगा कि हम अपना डिसएडवांटेज कैसे कम करें। पंजाब एक्सपोर्ट्स 80% ऑफ इंडियाज हैंड टूल, बट पंजाब की लोकेशन इज नॉट नेक्स्ट टू अ पोर्ट, तो हमारा फ्रेट डिसएडवांटेज हो जाता है, स्पेशली व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम पंजाब। तो फ्रेट डिसएडवांटेज को हम कैसे न्यूट्रलाइज करें। और फिर एक सबसे बड़ा जो इशू आता है वो कैपिटल कॉस्ट, कि अगर हमें आज मॉडर्नाइज करना है, हमें एक चाइना से कम्पीट करना है, तो वी हैव टू पुट इन कैपिटल। अब हम इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है स्पेशली फॉर एसएमईज, इफ यू आर डूइंग गोइंग फॉर अनसिक्योर्ड, 11-12% हो जाता है। चाइना में आपको आज 4% पे इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। इवन आफ्टर यू टेक इनटू अकाउंट एक्सचेंज रेट, 3 से 4% का हमारा कैपिटल कॉस्ट में डिसएडवांटेज हो जाता है। देन मोस्ट ऑफ आवर कैपिटल गुड्स आर इंपोर्टेड, तो नाउ देयर इज ईपीसीजी फॉर एक्सपोर्ट्स, बट फ्रैंकली इन द एंड उसकी जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट वगैरह मिला के होती है कि हमारी कैपिटल कॉस्ट हाई हो जाती है। तो हाउ डू वी मेक अवर कैपिटल कॉस्ट कम। तो ये सारे जो उसके सो सारे स्पेसिफिक डिटेल नंबर्स पॉइंट बाय पॉइंट है, ये डिटेल हमने सब स्टडी में एनालाइज किया है। उसके बेस पे हमने 3 तरह के रिकमेंडेशंस दी। एक तो ये कि क्योंकि सारी दुनिया में जहाँ ये चीजें बड़े स्केल पे होती है, क्लस्टर पे होती है, तो हमारा जलंधर में एक इनफॉर्मल क्लस्टर ऑलरेडी है, बट हमें एक हाई क्वालिटी क्लस्टर बनाना होगा कि कई लोगों के पास एक्सपेंशन के लिए लैंड नहीं है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी नहीं है, R&D फैसिलिटी नहीं है। तो हमने एक पूरी डिजाइन बताई है कि इस तरह का क्लस्टर बनाने की जरूरत है, व्हिच कैन बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड टूल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। दूसरी कुछ हमने रिकमेंडेशंस दी हैं वो पॉलिसी लेवल पे है, अराउंड लेबर फॉर एग्जांपल, अराउंड इलेक्ट्रिसिटी पावर रिलेटेड, तो वो सारी रिकमेंडेशंस हैं। और तीसरा हमने फिर स्पेसिफिकली जो इंसेंटिव ब्रिज सपोर्ट चाहिए उसका कैलकुलेशन किया है कि इसको हमें कंपेटिटिव बनाने के लिए, अगर हमें टारगेट लेके चल रहे हैं कि अगले 10 साल 5 से 10 साल में हमें 15 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है, ये करने के लिए कितना लेवल का इंसेंटिव सपोर्ट ब्रिज चाहिए। क्योंकि एक बार जब इंडस्ट्री स्केल पे आ जाएगी अपने आप कंपेटिटिव हो जाएगी, एंडलेसली इंसेंटिव नहीं दे सकते, पर अगले 5 साल में क्या इंसेंटिव चाहिए और किस फॉर्म में देना चाहिए वो भी हमने डिटेल में निकाला है। और हमने ये भी कैलकुलेट किया है कि अगर ये इंसेंटिव पैकेज आज सरकार देती है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट होगा, जो 25 लाख जॉब क्रिएट होंगे, उससे जो एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू आएगा, जो सरकार खर्चा करेगी उसका खुद सरकार को 10 गुना मिलेगा 10 years because of the growth in industry and tax collection। तो I am personally very excited to manufacturing and exports capital of the world, the industries here and the government to see how can we make it happen. Thank you so much. And in fact, how to make Punjab and therefore India the hand tools capital of the world. And my colleagues are sitting here in the industry, the detailing industry. They will tell you that we have been engaging with them much more than time they would like us to come to them. We keep coming to them again and again. Okay, then now we are going to go to we are trying to connect. So I will not go through the entire list which you should just share, but I would like you to respond, Chimiji, to what any one or two challenges. In fact, specifically, I would like you to talk about the capital cost and the capital goods you had mentioned earlier. So can you please throw some more light on that? And of course, you are free to take your 5 minutes and share whatever you like, but please do address this challenge about expensive capital and how when we can better compete with China. Ashwini. Thank you, sir. Sir, before I answer your point, but I want to start this.
this industry started in 1950 in Jalandhar, and since then this industry is growing on their own. भगवंत मान जी बड़ा सोहना कहते होंगे कि जहाज जड़ा होंदा उड़न वाला ਉਹਦਾ बैक गियर नहीं होंदा। इस इंडस्ट्री ने भी कभी बैक गियर नहीं देखा, ग्रो किया और इन्ना का ग्रो कर गए कि साडी जर्मनी के टूल्स ਜਿਹੜੇ कि नंबर 1 ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਜਰਮਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਡ ਮੈਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫੋਰਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ MSME ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ एक्सपोर्ट जलंधर तक जाना तो है ही और मैं कहूँगा अगर साड़ी थोड़ी बहुत मदद हो जाए और थोड़ा बहुत अपना रोड मैप बना लीजिए, कोई दिन ज़्यादा दूर नहीं कि 2030 तक असी 10,000 करोड़ लेके पहुँच सकते हैं एंड विच इज वी आर वेरी एम्बिशियस, वी आर फार वेरी बेटर देन इन क्वालिटी फ्रॉम चाइना। लेबर लॉज कवर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सामने कोशिश करता है, एक्सपोर्ट साढ़े पंजाब में बिल्कुल नहीं पर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी नहीं आएगी तो उसी देखो आएगा मैक्सिमम GST तो मिल रहा है पंजाब एक्सपोर्ट का मिल रहा है हर जगह तो GST माफ करें। मैं बेनती करांगा करवंदा जी बैठे मेरे को सर सानू साडी बेनती है कि एक एक्सपोर्ट प्रमोशन जरूर बना के सानू ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ MSME ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ देयर ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ encourage that he has to be something। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਕਹੀਏ ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸਰ ODOP ਸਕੀਮ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਊਂਗਾ। ODOP ਸਕੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ 1 district 1 product। ਸਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ सारे काम डिप्टी कमिश्नर करते हुए पर नहीं सर उन्होंने को ऑलरेडी इतना काम है वो मीटिंग से नहीं कॉल कर पाते, गल भी नहीं होती पूरी। सर सानू तो यह भी नहीं पता कि किहड़े डिस्ट्रिक्ट च किहड़ी प्रोडक्ट बनती है किनों असीं प्रमोट करना। UP दे विच GI जियोग्राफिकल इंडेक्स प्रोडक्ट उन्होंने करीबन 200 के करीब अपने UP के बनारस के मुरादाबाद के प्रोडक्ट इंडिकेशन ले आए हैं। सर वो गवर्नमेंट में फायदा भी वो स्टेट में मान है कि जिन्ना भी फॉरन डेलीगेट आता है कोई भी आता है उन्होंने जो गिफ्ट जाता है वो GI इंडिकेटेड प्रोडक्ट हो जाता है विच इज़ ए वेरी बिग। मैं उस UP की तारीफ करांगा, योगी सरकार की भी करांगा और लोगों की करांगा बट वो ज़्यादा रोल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जिन्हें भी डिप्टी कमिश्नर है जिन्हें भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं वो बहुत बड़ी मान की बॉडी जी 1 district 1 product किताब नहीं बड़ी उन्होंने DGA मिल के किताब विजन 2026 वो किताब जितनी भी गई सारे डिपार्टमेंट्स को मैं पढ़ी नहीं किसी
ਪਰ ਅਪਡੇਟ ਡਾਟਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ। ਸਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਫ ਯੂਰ ਗਰੋਥ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਦੀ ਉਹ $100 ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨੂੰ $150 ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰ I was very happy to और रातों रात 5 साल बाद में फिर विजिट किया उसे कंपनी। सर बाय दैट टाइम दे वर हैविंग अबाउट 10 members। सर साढ़े इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी साढ़े इंडस्ट्री मिनिस्टर से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री नाल काम करना पैना, खाली डाटा करना कुछ नहीं। सर अपन को जागना पैना, अज भी जागांगे कल भी जागांगे, जब तक थोड़ी सपोर्ट असं कहते चलो जी पैसे नहीं दो, पर कोई टैक्नीकल कंसल्टेंट्स लिया के इंडस्ट्री को वाई नॉट भी कोई साड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, हार्डनिंग की प्रॉब्लम आती है, कोटिंग की आती है, पर छोटी छोटी इंडस्ट्री को टैक्नीकल कंसल्टेंट्स चाहिए। सर गवर्नमेंट को इन्ना पैसा पिया है, इन्ना पैसा जोड़ा असं यूज असी प्रोसैस पैसा सानू मिलता, सब कुछ असीं यूज नहीं करते, दैट इज वेरी फैक्ट। सर रही मार्केटिंग की गल, लास्ट पॉइंट चाइना की मार्केटिंग पॉलिसी बहुत है। सर जो उन्होंने कोई प्रोडक्ट किया हर एक एम्बेसी के कमर्शियल सेल है, हर एक एम्बेसी साड़ी एम्बेसी, और बिलीव करो असीं 3-4 एग्जीबिशन की उन्होंने सारी फीडबैक इंडिया की दे दी थी कि जी पाइप या क्रॉस रेंज या दूसरे आइटम वो इंडिया एज रेट दे गोज टू द चाइना बैक टू ऑफिस, वो अपनी इंडस्ट्री से कर देते थे, देन दे वर्क आउट देयर प्राइस अकॉर्डिंग एंड दे वर्क आउट ऑन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। सर दैट इज वेरी बिग थिंग। सर बाकी बड़े सोहने पॉइंट दोषी जी ने दस दिते हुए, एंड मैं ये रिक्वेस्ट करांगा गौतम जी को कि एक मीटिंग्स असी इतने ना रोक दईए, मीटिंग तो मीटिंग करिए, असी रिजल्ट फाइंड आउट करिए, और सानू दिल्ली आना तो असी जरूर आवांगे। साडी बेनती होए कि तुसी पंजाब सर्कल बैठ जिद्दां भी होया असी बता पर इन्हें ट्रेन दौड़नी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू। Training was drawna hi drawna hum should not have a common goal of how to make Punjab number 1. That's why we have already initiated study. You are part of the study. You know very well. We are doing the study. We are working with Punjab government. Now I invite Gautam Kapoor ji to please make his 5 minutes of remarks. Sanjeev ji, thank you. Okay, before I start saying anything, I must thank the Punjab government and NITI both to be here. You know, I've been in this industry for a little over 40 years. Never till today seen anything like this. NITI coming to Jalandhar to figure out where the industry is going. So this is a very good beginning, and I really thank NITI, especially Sanjeev. We've been in touch with each other for more than a year. The way he has initiated this, I have no doubt
should also be a partner with us. They need to think business. Unless you start thinking business, you cannot help the industry, you cannot help the businessman. So you need to think in similar ways. Why should there be any obstacles for a business? Whether it is pollution or it is passing of building plans or CLU, why should there be anything? I personally feel that you need to come out with a scheme of self-certification. You make a plan, you say, okay, above 20 crores or above 50 crores or above 10 crores, anything you fix, that if this is the turnover of the company, they are allowed to do self-certification. I am saying this because I am suffering this even today, being in the industry for 45 years. When I put up a new unit, I have no hesitation in saying that things are not. How we can help the industry ease things out. Also, that at the higher level, the will and the desire is there to help. But when it filters down to the clerical level, it is a nightmare. It is totally a nightmare at the clerical level. I have, of course, in the past discussed various issues with the Chief Minister. Resolved. Chief Minister or the senior officer, they pass an order, but after all, it has to get filtered down. The lower rung people have to actually put it in being. That is a nightmare. So I think we need to resolve this issue. As I said, how I started was that I'm thanking NITI for coming here, and this is wonderful. And I want to put it on record that thank you, Sanjeev. Initially, this and industry, and I'm sure things will start to move in that. As we were discussing, Mr. Khan, in the room with the Chief Minister, also just pointed out, we've been in this for a long time, 45 years. So the industry is going. We used to be on scooters, we have cars, no issues at all. But what I see is desire from NITI, desire from Sanjeevji, Mr. Kant, and Sumanji was that how can we help Punjab? This is the desire from your side, that how can we help? I think the base of the matter is how can we help? As I pointed out before, that there was this interest suspension scheme introduced by the Finance Ministry for exporters, that we will give a rebate on interest to exporters. Firstly, as I was mentioning before, why do you think they did this? Why did they give exporters a subsidy on interest? Point one. Okay, after giving that subsidy on export, why did they withdraw it? So either that was wrong or this is wrong. So they have to have, Finance Ministry, they need to be answerable. Then what is the reason for giving it and what is the reason for withdrawing it? First, the subsidy was 5% and then they reduced it to 3%. And now they just throw it in the bin. Why? I think we need to know, the industry needs to know. I have also realized over the past 40 years that whenever the
dollar reserves of the country go higher, they withdraw the incentives from the industry. I'm not saying it's today, I'm just telling you the past 40 years. They withdraw these incentives because they have enough foreign exchange. When the foreign exchange starts to go down, then they start to give that. See, if you want to help the industry, if you want to compete with China, you can't have this yes and no. Today is there, tomorrow is not there. This has to be one scheme. My humble submission is, how can the industry last where the interest rate is 9%? How can it last? Export business, you take average of, finance ministry will have average of income tax or profits of every industry, every organization. If you take the average will not be more than 5%. Average will not be more than 5%. So if I'm going to give 5% more interest to the bank, I'm left with nothing. Where will I get the money to reinvest in machinery, land, building? Where is the money? So I think NITI Aayog needs to take this up with finance ministry. That this is, either you don't say that we want to help the industry, then it's understandable, leave us on ourselves. The way we are going, we'll keep going. But if you really want the industry to get a fillip, you need to industry to kickstart, then you need to help. Either you don't say it. If you say it, then you do it. You can't just keep saying it. Like my colleagues pointed out, Punjab is a landlocked state. It is a fact of the matter that it is not competitive. We cannot take the goods to the port and then sell. It is not possible. You may have a data in NITI Aayog which says something else, that it does not work like this. Mr. Bailey was here. Okay. Okay. Where was I? Yeah. Mr. Berry, I was just. Okay. High interest. Okay. I was saying. Okay. First, let's restart this high interest rate. We are paying, exporting community is paying 9% interest rate to the bank. Now you would have this data with finance ministry that all exporting units on an average, you take average of any industry, whether it is hand tools or sports tools or any industry, your average profitability will not be more than 5%. So if I'm going to pay 5% more interest to the bank, where is my profit? If I don't have a profit, how can I buy new machinery? How can I buy more land? How can I put more factories? I cannot. So either you say, look, I don't want to do it, you are on your own, you handle your stuff, which we are handling for the past 40, 45 years. But if you generally want to help, then you need to take up this with the finance ministry, that who is taking this decision, first giving this incentive, then withdrawing it. If you've given it, you have to have a thought process. Why am I giving this interest subvention? If I'm taking it back, I again need to have a point. So they may have their point that in their budget they don't have budgetary provisions and things like that. We are not talking about that. We are talking about how to improve the industry, how to put up more units, how to increase production, how to increase our exports. Worldwide, over, if you take again the average, your interest rate is not more than 3. Now it is 3.5%. Initially it was even lower, it was 1.5%. But after COVID it's come to about 3.5%. So we are paying 5% more, and we
we are just hand to mouth. We just working from day to night, and there's no profit. So if there is no profit, we cannot put in more money. Second, I was talking about, it's a fact of the matter. Punjab being landlocked, we cannot sell so many tools. We cannot export because the cost of freight from Punjab to Mundra or to Bombay or wherever it is going, it's not there. I was mentioning, Mr. Kant just mentioned that they have some data which says that the freight does not make much difference. I totally disagree with it. At least what I am talking about, only for hand tool industry. I don't know about other industry. For hand tool industry, if you want to grow this industry to the next level, you have to come up with a freight equalization scheme. You have to. And this is a state subject, but we all know Punjab does not have the money, does not have the resources, either to give us freight subsidy or even to give us electricity. My next point is electricity. They do not have the money. So that and compared to your neighbor Haryana, the discussion inside he was saying 5.65%. That's not true. That is not true. Sir, we are not talking about Rajasthan, we are talking about Punjab. Sir, Himachal is 6 rupees, we are over 8 rupees. So we are 25%. We are interested in how we want to promote Punjab. I have no control over that. I am just saying that for Punjab, if you want the industry to grow, you have to do this. Okay. No. Okay. We have discussed this over a period of time. That steel cost, what happens is whenever there are elections, close to elections, the steel jumps 20%. I don't know for what reason. So I think these steel companies, they are a mafia. They increase the price of steel at a whim. And we have no control of that. I don't know how the government can help in that because they all business companies, they also have to make a money. But this is just a point which I thought I must bring it to your notice. Okay. And one more thing is there. EPCG. We have an EPCG scheme for new machinery. But a lot of industry needs second-hand machinery which is available in Korea, in China, in Germany, in Italy, in Taiwan. Second-hand machinery is available which can last another 35, 40 years. So much cheaper. So I think EPCG should be also available on second-hand machinery instead of, So these are the basic. Thank you so much. Very good points have come. Karvandaji, I know you are a tough point, but please go ahead. You have the support of the Special Chief Secretary. First of all, I want to convey special thanks to Thank you, Sanjeev sir. I heard at length Mr. Puneet Rana, Jish Doshi ji, Gautam Kapoor ji and Ashwin Kumar. They are the real brand ambassadors of Punjab and they are doing very well, no doubts. There is always a scope of improvement. I had noted all their points. Let me tell you, like the Honorable Chief Minister had already explained, like when the new government came to power in Punjab, we have Punjab Industrial Policy 2022. So, the present fiscal incentives and all those things, they are governed by the Policy 2022 and we have, let me tell you, like I am Secretary Investment Promotion also and Industries and we have Invest Punjab portal also, like investment promotion number 1 in the Government of India, DBIT, because of our 3
fiscal incentives. No doubt, it's good to compare, but the Punjabis, we have the spirit, and at present we are offering number of fiscal incentives as compared to other states. Yes, Mr. Kapoor was right in saying, but yes, we are one of the those states which are offering one of the cheapest PAR in the country, that is 5.6, but it's per ED is added further on. I'll now to your point, Mr. Kapoor. So fiscal incentives, let me tell you, like we are offering SGST reimbursements, that is related to the 100% of the FCI for the coming 10 to 50 years. Then we offer ED, electricity duty exemptions, also 100% of the FCI for coming 10 years. And then, like Punjab is one of those states which are offering employment subsidy, like the good sign for the textile, for the sports, for other employment focused industry. That is to the tune of rupees 48,000 rupee per person per annum. Like if you are paying a salary of 20,000 rupee per person per month, 4,000 is given by Punjab government. That is the employment subsidy. It's only and only if you file a CAF. CAF is a combined application form. You file, that is on Invest Punjab portal, and we have business facilitators at all the district levels. We have 23 districts, 23 GMs sit there. We and up to 25 CR. The Deputy Commissioner is the CEO Invest Punjab, and beyond 25, I am there at the state level. We actually love industry. We want the industry to grow. We, as you said rightly, we think on those lines. Yes, we know your hitches, your hurdles, because if we don't know, we can't help you. We are there to help you, and we are totally governed. And even every week, let me tell you, every week there is a BRM, that is Business Review Meeting. I hold it every Wednesday, 12 o'clock, and all the investors, maybe the new one, maybe the investors who are to expand, they are requested to come physically or through online, or they owner may come, or they may send their rep also through online. And all the regulatory clearance authorities, they are attending that BRM every week. So I monitor the state level also and the district level also. Let me tell you, the state level potency now till date it is 0 beyond 25 crore. And the district level potency, I hold the GM responsible for that. It may be labor department, it may be factories department, it may be any other department. And the investors, they have come with a big relief. Yes, if any department, line department, they fail to deliver within the deadline, that the deadline is 21 days. If they perform in 60 days or 80 days, they are supposed to face music. Our Chief Minister has given clear-cut directions. Whoever doesn't adhere to the deadlines, book them as per law. So that part is going on. Exceptions can be there. Yes, it can be there. I admit it. But the things, this is a law, and we are proceeding towards the our zero potency status. Let me tell you also one part. Mr. Rana and Mr. Piyush Joshi mentioned about the hand-to clusters also. Let me tell you, there is a wonderful policy of government that is called CFC, Common Facility Center. That is even applicable for all industry and hand-tool industry also. That is a scheme in which 85% of grant, I again say 85% of grant is given to a cluster, and remaining 15% is borne by the SPV, Special Purpose Vehicle of the industrialist. Let us say you want to have hand-tool cluster, we can give you 30 crore. After 30 crore, 26 crore is a grant, and remaining, it will be a contribution by SPV. It will be run by you, and you are to run the show, you are to float the tender, everything. It will be routed through state government, and we will get the money from Government of India. It's part of CFC. So, and it's applicable for every sector. Maybe you want to have smaller group, you make a group of 9.5 crore will be to you within 3 10 बंदे इकट्ठे करने हैं और
और मंशा करनी है कि यस यह काम करना है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर and 9.5 crore can be given to you, and subject to condition, you know, if you make an DPR, we'll help you in making DPR, and the state government facilitates. I'll become your advocate, I'll take your case to Government of India, and it's sanctioned within 3 months. So that is because we have in see a lot of CFC culture is required in Punjab. Tamil Nadu has 150, Andhra has 100, and we are lagging in this band. We are hardly reached a number of 10, because in coming 2 months we'll reach up to 21, because it's a total grant given to industries. Please come forward for this. This is a wonderful scheme of government. And thirdly, so please, yes, I think we can have the question answer session. Otherwise, So what I'm going to do is, because we are really pushed for time, so the question answer is just to lunchtime when we have the networking lunch. But my request now is, because we're going to have one more session before lunch, and so we had some very good points made here. In fact, I would like to echo what Gautamji and Rashmiji have said. Our roadmap has to be very clear. So roadmap Piyush is already working on. We are working very closely. In fact, we'll come and talk to Punjab government in detail about this. Roadmap of moving the hand tools from a goal of 6,000 crores to double, 510,000, double it by 2030. Piyush and his team are already working. We are NITI are working on that. Second part is, you mentioned about the role of skilled labor. We have to work on that part. The third part you mentioned is about infrastructure. You mentioned about power, freight equalization subsidy, how we can work on that. Then interest subvention, what are the challenges arising out of that, and the steel cost. Yes, that's because we are not saying that this workshop is going to solve all the problems, but at least they are bringing them out in the open. Nobody in the government is saying that they are not real. They are very real. The idea is, how do we work towards a solution? And at the end of the day, it will mean reallocation of resources, but most importantly, the purpose of a workshop like this, and I have been sharing with Gautamji and Rashmiji and others, is please believe that the government, whether it be central government and now it's very clear state government, are standing with you. We want to listen to you. We are there to listen, make policy which will help you. So please take it from that, and therefore allow me to conclude this session at this moment, because Honorable VC is here and they would have to listen to the sports. We will be having a networking lunch in which we will be having the same people will be here. We will discuss this further. So please allow me to conclude this session and thank everybody here. And I would like to invite the next panelists to please come, so that we can have a short session for that. Right, thank you so much.